हरि ओम नमो नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. In last class we have seen Mangalacharanam, then how Kavi Kulguru describes himself as a Mandaha, again he calls himself as Vamanaha, etc. We have seen that. Now next topic actually he is touching. So from 5th shloka till 9th he is going to describe about Raghu Vamsha. So let's see how Raghu Vamshiya kings were. So let me share the screen. Are you able to see, right? Okay. सोऽहमा जन्म शुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्. Now, before starting commentary upon this shloka, Mallinath ji has written one line. एवं रघुवंशे लब्ध प्रवेशः तद्वर्णनां प्रतिजानानः सोहम इत्यादिभिः पंचभिः श्लोकैः पुलकेन आह. This is introduction line. He says, now I have taken a job of describing Raghuvamsha. To describe that, now he is going to use 5 shloka. So now whenever there is a group of 5 shloka and lastly if you see the Kriya Pada, then that 5 shlokas are called Kulakam. There are different names for this kind of thing. Just a minute. Okay. There is one shloka. Ekanvayi panchanyuna shloka sangatah Kulakam. And now here Kulakam Shabda has been used. Kulakam means what? Where you will find at least 5 shlokas, then there would be Kriyapada. Means what? Minimum 5 shlokas. There can be more than 5 shlokas also. So that would be called as Kulakam. Okay. What about 2 shlokas and thereafter Kriyapada is coming? That would be called as Yugmam. Like in Gita, many times this kind of shloka, there would be 2 shlokas together. And lastly, they will put some Kriyapada in between. That is called Dvabhyam Yugmam iti Proktam. If there are 3 shlokas, then that is called Visheshakam. Tribihi Shlokaihi Visheshakam. If there are 3 shlokas coming together, and lastly if they put some Kriya Pada in between this shloka, then that is called Visheshakam. If there are 4 shlokas, then Kalapakam. The word is used, Kalapakam. Kalapakam. And Tad Urdhvam Kulakam Smritam. More than 4 Kulakam. Right? So now it is going to be Kulakam. Lastly, you will find Raghunam Anvayam Vakshe. I am going to describe Raghunam Anvayam means Raghuvamsham Vakshe. Raghu dynasty, regarding Raghu dynasty, I am going to explain. That's how. Okay. Now let's see, focus on these words. Saha aham nama kim? Saha Kalidasah
कीदृशः आसीत् कालिदासः? मन्दः कवियशः प्रार्थी। इतोपि द्वितीयः श्लोकः, तृतीयः श्लोकः, चतुर्थः श्लोकः स्मर्तव्यः. In that 3 shlokas he has described himself, his mandi. Wa alpa vishayamati. I am alpa vishayakmati, aham asmi khalu. तो कालिदासः अहम अल्पविषयामतिः अहम मंदः अहम. That way he had described himself. So saha aham, that Kalidasa, that I am going to explain what Raghunam Anvayam Vakshe. This line is going to come in 9th shloka. Okay. Before that, there are going to be some adjectives of Raghunam. The main word is Raghunam Anvayam Vakshe. Now there would be question, Kidrushanam Raghunam. So now in all 5 shlokas you are going to find Shashti Vibhakti Bahuvachanam, Shashti Vibhakti Bahuvachanam Sarvatra. So let's see first one. Ajanma Shuddhanam. Ajanma Shuddhanam means what? Now a word, a upasarga has been used. So actually this is called karma pravachaniya and it is samasta pada also. Okay. A means what? Starting from. Ajanma means what? Janmanah arabhya iti artha. Those who are pure from birth. That is how you have to understand this samasta pada. Ajanma shuddhanam means ajanmanah, janmanah arabhya, starting from birth. Shuddhanam, Raghunam, Anvayam Vakshe. So first line you can say Aham Kalidasah Ajanma Shuddhanam Raghunam Anvayam Vakshe. Okay. आजन्म शुद्ध, जो जन्म से ही शुद्ध है, ऐसे वाले राजा लोग, ऐसे रघु नाम अन्वयम वक्षे. फर्स्ट लाइन. सेकेंड, आफलोदय कर्मणाम. नाउ हियर आ शुड बी टेकन एज टिल, तब तक, पर्यंतम. आफलोदय कर्मणाम. अत्र आफलोदय, यावत् फलोदय न भवति तावत् पर्यंत कर्मणाम मीन्स जब तक काम की समाप्ति नहीं होती, जब तक फल की उत्पत्ति नहीं हो जाती, तब तक काम करने वाले, मतलब बीच में छोड़ने वाले नहीं ये लोग. आफलोदय कर्मणाम. ओके. सो until performing action, until those action bear a fruit. That's how they were. So this becomes adjectives of Raghunam. Kidrushanam Raghunam Anvayam Vakshe. Afalodaya Karmanam Raghunam Anvayam Vakshe. ठीक है. तत्र अस्य कृते एव आफलोदय कर्मणाम इत्यस्य कृते अयं प्रसिद्धः एकः श्लोकः. तत्र उत्तमाः जनाः भवन्ति, नीचाः जनाः भवन्ति, मध्याः जनाः भवन्ति. ये नीचाः जनाः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति? प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः कार्यमेव न आरभन्ते. कस्मात्? विघ्नं भविष्यति मम कार्ये. इमं कार्यं यदि करिष्यामि चेत् तत्र ईदृशं संकटं तत्र भविष्यति इति कृत्वा कार्यारम्भम् एव न कुर्वन्ति. तत्र मध्याः जनाः भवन्ति, वो बेचारे काम तो शुरुआत कर देते हैं प्रारभ्य, किंतु विघ्न निहिताः, विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः. मध्याः एव विरमन्ति, कार्यम् आरभन्ति, किंतु विघ्न भयात्, विघ्नेन निहताः विहताः
ते मध्ये एव विरमन्ति। किन्तु उत्तमजनाः किं कुर्वन्ति? विघ्नैः पुनः पुनः हन्यमानाः अपि प्रारब्धम् उत्तमजना नः परित्यजन्ति। वॉट एवर हैपन, करेंगे या मरेंगे, है ना, डू और डाई, दे विल फिनिश दैट वर्क। मीन्स व्हाट? आज फलोदय कर्म नाम, जब तक फल प्राप्ति नहीं होती तब तक रुकेंगे ही नहीं। ऐसे राजा लोग थे वो, देखो। और कैसे थे? आसमुद्र क्षितीशानाम, कियत् तेषां राज्यमासीत्, कियत् विस्तृतम् आसीत्। आसमुद्रम नाम किम? समुद्र पर्यंतम। तो चारों ओर देखिए, चारों ओर जब तक समुद्र नहीं आ जाए तब तक उनका राज्य होगा। कितने बड़े राजा होंगे। मतलब क्षितीशानाम, आसमुद्र क्षितीशानाम। So now their boundaries were oceans. Till that they used to run a kingdom. And what about स्वर्ग etc.? उच्यते आनाक रथवर्त्मनाम, आनाक रथवर्त्मनाम। अत्रापि नाकपर्यन्तं, नाक नाम किं? स्वर्गम। नाकम मीन्स स्वर्गम, आनाक मीन्स स्वर्ग पर्यन्तम, रथवर्त्मनाम येषां रथः स्वर्गपर्यन्तं गच्छति स्म, तादृशानाम् आनाकरतवर्त्मनां रघूनाम् अहम् अन्वयं वक्ष्ये इति अर्थः। एतावता सर्वं स्पष्टं यदि नास्ति चेत् वदन्तु। किं पदं नास्ति, स्पष्टं नास्ति? सर्वं स्पष्टं? यदि नास्ति स्पष्टं, मल्लिनाथं शरणं गच्छामः। ओके, सह अहम डैश डैश डैश, लास्ट लाइन वुड बी रघूनाम अन्वयं वक्ष्ये। किं विधानां रघूनाम? अत्र प्रश्नः, किं विधानां, कीदृशानां रघूनां? तत्र उत्तराणि विशेषणानि योज्यानि। अभी ये जितने भी विशेषण आने वाले हैं वो उसके साथ जोड़ने हैं। जैसे कि आजन्म शुद्धानाम रघूनाम, आफलोदय कर्मणाम रघूनाम अन्वयं वक्ष्ये, आसमुद्र क्षितिशानाम रघूनाम अन्वयं वक्ष्ये, आनाकरथ वर्तमनाम रघूनाम अन्वयं वक्ष्ये। ऐसे हर एक श्लोक में लगाना है, ठीक है? ओके। आजन्मनः नाम किम? जन्म आरभ्य, जन्मनः आरभ्य। अयम् अर्थः कथं लब्धः? अत्र तु आरभ्य इति कुर्वन्ति, अग्रे तु पर्यन्तम् इति अर्थं कुर्वन्ति। अत्र द्वेधा अर्थः आनीतः कुतः? उच्यते आङ्मर्यादाभिविध्योः इति अव्ययीभावः। अत्र अव्ययीभावसमासः। तत्र आङ् इति पदं यदा उपयुज्यते तस्य आङ् इति पदस्य अर्थद्वयम्, एकं मर्यादा, दूसरा अभिविधि। मर्यादा मीन्स आरभ्य इति, आरभ्य यहाँ से लेकर, एंड अभिविधि मीन्स व्हाट? अप टू, अंटिल, पर्यंतम इति अर्थः। तो इसलिए पहले ही लाइन में आजन्म शुद्धानाम, वहां आजन्म इसका अर्थ करेंगे जन्म से लेकर के, बाकी जगहों पे तक ऐसा अर्थ करेंगे, पर्यंतम ऐसा अर्थ करेंगे। तो सारे जगहों पे पर्यंतम अर्थ है। देखो, आफलोदयम मीन्स व्हाट? फलोदय पर्यंतम। आसमुद्रम नाम समुद्र पर्यंतम। आनाकम मीन्स व्हाट? नाक पर्यंतम, स्वर्ग पर्यंतम। तो सारी जगहों पे पर्यंत 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 ऐसा भी अभिविधि है। ठीक है, इतना ठीक है। आजन्म शुद्धा नाम किम? निषेकादि सर्व संसार संपन्ना नाम। निषेक मीन्स व्हाट? गर्भाधानम। सो गर्भाधानादि संसारादि, नॉट संसारादि, संस्कारादि ये संपन्नाः ते आजन्म शुद्धानां। शुद्धि संस्कारैः भवति इति कृत्वा
सर्वे संस्कारयुक्ताः ते राजानः आसन् इति अर्थः. They used to perform all kind of shodasha samskar, not only shodasha, there were many, so they used to get performed through these samskaras. Okay, afalodaya कर्मणाम का अर्थ करते हैं afalodayam means what? afal सिद्धेः कर्म एषां ते तथा उक्ताः तेषां रघूनां अन्वयं वक्ष्ये इति अर्थ. नाम किं? प्रारब्धं प्रारब्धांत गामिनाम, until they get the fruit they will be working. आसमुद्रम क्षितेः ईशानाम, उनकी क्षिति कहाँ तक थी? आसमुद्रम, समुद्र पर्यंतम उनकी ये होती थी, राज्य की सीमा होती थी, वहां तक वो राज्य करते थे. नाम किम? सार्वभौमानाम इति अर्थः. सार्वभौम राजा थे. और आनाकम रथवर्त्म एषाम ते तेषाम रघुनाम अन्वयम अहम वक्ष्ये. इसका तात्पर्य क्या है? बोलते हैं इंद्र सहचारिणाम, दे वर फ्रेंड्स ऑफ इंद्र, दे यूज्ड टू गो इवन स्वर्गलोक. ठीक है. अत्र सर्वत्र आंग अभिविधि अर्थत्वम द्रष्टव्यम. I have already told that आंग उपसर्ग here should be taken as अभिविधि अर्थक, पर्यंतम इत्यस्मिन् अर्थे स्वीकर्तव्यम्. अन्यथा मर्यादार्थत्वे तु जन्मादिषु शुद्धि अभावात्, शुद्धि अभाव प्रसंगात्. ओके, अयं तु पंचमः. अग्रिमः अधुना. यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्. अपरः साधुश्लोकः. अत्र एकं अव्ययभावसमस्तपदम् अहं वदामि, तस्य विग्रहं वदामि, तेन भवन्तः अर्थं कर्तुं पारयिष्यन्ति. हाँ, एक पद में बोलने वाला हूँ जिससे आप बाकी पदों का अर्थ अपने आप लगा सकते हो. जैसे कि शक्तिम अनतिक्रम्य उच्यते यथाशक्ति. यथाशक्ति यदा वयं वदामः तस्य अर्थः भवति शक्तिम अनतिक्रम्य, नॉट गोइंग बियॉन्ड द कैपेबिलिटी. यथाशक्ति, एज पर आर पावर, यथाशक्ति. तथैव अपरः शब्दः प्रयुज्यते यथामति. तस्य अर्थः कीदृशः भविष्यति? मतिम् अनतिक्रम्य, मतिम् अनतिक्रम्य. अधुना एकमेकं शब्दमात्र स्वीकुर्वन्तु, भवन्तः एव अर्थं कर्तुं पारयिष्यन्ति. यथाविधिः, यथाविधि अस्य कः अर्थः? विधिम् अनतिक्रम्य, not going beyond vidhi, that is called yatha vidhi. Yatha kamam means what? Kamam anatikrmya. अपराधम, अत्र ध भवेत्. हा, क्षम्यताम्. अत्र थकारः कथं दृश्यते? धकार भवेत् खलु. हाँ, वदन्तु वदन्तु. अपराध अनतिक्रम्य, अपराधम् अनतिक्रम्य. अपराधम तथैव यथा कालम्, कालम अनतिक्रम्य, कालम् अनतिक्रम्य. अधुना पश्यन्तु अर्थम्. यथाविधि they used to perform Agni, Hutagni, etc., offering oblations, etc., on perfect timing. Vidhim, vidhi means timing, on time. Okay, yatha vidhi, vidhim anatikramya, they kadapi अग्नि इत्यादि क्रिया न कुर्वन्ति स्म. नाम यथा कालम सर्वं ते
Agni oblations etc. they used to do. Again, what they used to do? Yatha kamam archita arthinam. Arthi means desirous. Prarthi shabda we have already seen. Okay, arthinam archita. If people come to them to ask someone, those people also were fulfilled. Their desire also were fulfilled on perfect time, as well as yatha kamam, whatever they used to ask, they used to get. Means what? Whenever they used to perform Agni Adi Kriya, some beggars, we should not say, some what Yachaka used to come to this Rajan and they used to ask something. So these Rajas, this Raghuvamshiya Raja, they used to give whatever they used to wish. याचकों ने जो जो पूछा वो देने के लिए समर्थ थे. तो अर्थीनाम अर्चित ऐसा पद वहां लगाना चाहिए. तो यथा काम अर्चित अर्थीनाम, दिस बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ रघुवंशीय. ओके, नेक्स्ट. यथापराध दंडानाम. These people, this Raja Lok, this Raghuvamshiya were giving punishment as per aparadha. Okay, proper in the how to explain this? They used to punish after looking at their aparadha, their crime. Okay, that way. And yatha kala prabodhinam, yatha kalam, on time they used to wake up, right? That way. So now 4 things Raja has to do. He has to do Agni Tarpana, he has to give Danam for Yachaka, Raja has to take care of crimes etc. by giving danda, giving punishment, and that Raja also should be yathakala prabodhi, he should get up on time so he can perform all these things. That is the ashaya. Mallinatha. Vidhim anatikramya yatha vidhi. Yatha iti sadrushya iti avyay bhava samasah tatha ut shabdena supsupa samasa. Okay, that is not important. Let's say next padam. Yatha vidhi hutaha agnayah yaihi tesham. Yatha vidhi hutaha agnayah. Those who have performed Agni on time. Yatha vidhi. Tesham raghunam anvayam vakshe. Next is yatha kamarchitarthina archit arthinam. अर्चितार्थिनाम यथा कामम अभिलाषम. कामम इत्यस्य अर्थः अस्ति अभिलाषम. अनतिक्रम्य, अभिलाषम अनतिक्रम्य अर्थीनाम. where is that padam? Okay, here. अर्थीनाम कामनाम पूरयन्ति स्म इति अर्थः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते. यथा कामार्चितार्थिनाम. यथापराध दंडानाम तस्य व्याख्या अस्ति. यथा अपराधम नाम किम? अपराधम अनतिक्रम्य दंडः येषां तेषां रघुनां वंशमहम अन्वयम अहम वक्षे. जैसे अपराध किया है, अपराध के अनुसार दंड देने वालों राजाओं का वंश मैं वर्णन करने वाला हूँ. रघु के वंश के बारे में मैं वर्णन करने वाला हूँ. और कैसे थे वो? यथा काल प्रबोधिनाम. यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य. अभी 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठेंगे, है कि नहीं? प्रबोधिनाम, प्रबोधनशीलानाम. दैट बिकम्स देयर शीलम, स्वभाव. हाँ, अधुना अन्ते तैः एका पंक्ति स्थापिता. चतुर्भिः विशेषणैः देवता यजन
अर्थी सत्कार, दंड, दंडधरत्व और प्रजापालन पालन समय जागरूकत्वादीनि विवक्षितानि. Four things actually Kalidas has explained regarding their work. First one is देवता यजन, यथा विधि हुताग्नीनाम अनेन पदेन देवता यजन. नेक्स्ट इज अतिथि सत्कार, अर्थी सत्कार अथवा अतिथि सत्कार, वॉट एवर. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग दंडधरत्व. एंड लास्टली प्रजापालनमय जागरूकत्वादीनि. प्रजापालने जागरूकत्वं प्रबोधित्वं, that way we should take. Okay, so these four things become important for king. Next, this is very nice shloka. त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै ग्रहमेधिनां. Okay, so now त्यागाय संभृतार्थानां, they used to collect money, taxes etc. They used to get money. For what purpose? Uchyate tyagaya, to do dhanam etc. They used to get taxes etc. Okay, and satyaya mitabhashinam, they used to be mitabhashi, not like blabbering always. I will do this, I will do that, I will do this, not like that. Mitabhashi, when they need. त्यागाय and satyaya is चतुर्थी विभक्ति. क्षम्यताम. Is त्यागाय and satyaya is chaturthi vibhakti. Chaturthi vibhakti. Yashase prajayai, that is also chaturthi vibhakti. They sambhrita means collected. Arthanam. Okay, so now these rajas were collectors of earth, of wealth. For what purpose? For themselves, for their sake? No. Tyagaya, they used to do lot of dhanam. There is going to one beautiful shloka, like Samudra takes something from us but it gives in return. That's how. Or sun takes something from us, argham etc. but he gives a lot. That's how Raghuvamshi Raja also used to be. They used to collect taxes etc. They used to get money from praja to do dhanam etc. They were not swarthi. Satyaya mitabhashinam, they were mitabhashi, and whenever they used to speak for truth only. Pranajaya parvachanana, they used to do like that. And what? Vijigishunam, they used to desire to get victory. For what? Yashase, to get fame, to get yasha, to get kirti. That's how they used to perform the act of yuddha etc. And griha medhinam, they were grihasthas. Why? To enjoy? No. Prajayai, the purpose of grihastha is to create praja or generate praja, right? Prajatantum ma vyavachetsi iti Taittiriya Upanishad. It says if you don't want to take sannyas, take grihasthashram. Shruti says. For what? Prajatantum ma vyavachetsi. Don't do prajatantu cheda. You have to do praja utpatti. And that's how they used to do. Grahamedinam, they were grihastha. For what? Praja yai. Very beautiful shloka. See, there is no need to do anvaya because very simple. After each shashthyanta pada, you have to say Raghunam anvayam vakshe, tyagaya sambhrutarthanam Raghunam anvayam vakshe, satyaya mitabhashinam Raghunam anvayam vakshe. So mitabhashinam, sambhrutarthanam, vijugishunam, these are adjectives of Raghunam. Okay, now let's see our Mallinathji, what he says. Tyagaya, tyagaya means satpatre viniyogah tyagah.
त्यागः मीन्स् वाट्? सत्पात्रे विनियोगः भवेत्। यदि सत्पात्रम् अस्ति तदा सः त्याग इति शब्देन ज्ञायते। तस्मै त्यागाय, फॉर दैट त्याग दे यूज्ड टू संभृतार्थानां संचित धनानां। संभृतार्थानां मीन्स व्हाट? संचित धनानां। ओके, संचित धन देवर, न तो दुर्व्यापाराय, नॉट फॉर दुर्व्यापार। ओके, नेक्स्ट, सत्याय मितभाषिणां मीन्स व्हाट? मितभाषणशीलानां, that was their nature, that was their स्वभाव। न तो पराभवाय, मितभाषिणां पराभवाय न इति अर्थः। ओके, यशसे कीर्तये, यशः नाम किं? यशः कीर्ति समज्ञा च इति अमरकोशः। अनदर वर्ड फॉर यश इज कीर्ति, अनदर वर्ड फॉर कीर्ति इज समज्ञा। ओके, विजिगीषूणां मीन्स व्हाट? विजेतुम इच्छा, विजिगीषा। षष्ठी विभक्ति क्रियते चेत विजिगीषूणाम्, इच्छूणां, विजेतुम इच्छूणाम् इति अर्थ। किमर्थं विजिगीषूणां? न तु अर्थसंग्रहाय, अर्थसंग्रहाय न, जेतुम इच्छा आसीत् किंतु केवल अर्थसंग्रहाय वा? न न न, तथा न। यशसे, फॉर यशम। ओके, प्रजायै, प्रजायै नाम किं? संतानाय, संतान प्राप्तये। गृहमेधिनां, गृहमेधिनां मीन्स व्हाट? दार परिग्रहाणां, देवर दारा परिग्रही, दारा मीन्स पत्नी। ओके, न तु कामोपभोगाय, तत्र दारग्रहणं कामोपभोगाय न, किंतु प्रजायै इति अन्वयः। ओके, अत्र त्यागाय इत्यादिषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। किं सूत्रं स्मरन्ति वा? यदि भवन्तः न स्मरन्ति, मल्लिनाथः वदति, तद चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख, तत् एकं बृहत् सूत्रं वर्तते। वस्तुतः तत् सूत्रम् अत्र आगच्छति, समास मध्ये आगच्छति। तत्र पठामः। इत्यादिना तादर्थे चतुर्थी समास विधान ज्ञापकार्थात् चतुर्थी। अत्र समासे वयं पठिष्यामः पुनः अग्रे। गृहैः दारैः एधन्ते इति संगच्छन्ते इति गृहमेदिनः। गृहमेदिन मीन्स व्हाट? गृहैः एधन्ते संगच्छन्ते दारैः, जो अपनी पत्नी के साथ एक साथ रहते हैं उनको गृहमेधि बोलते हैं। दारेषु अपि गृहा इति अमरः। दारा शब्द के लिए दूसरा शब्द यूज होता है गृहा। गृह शब्द का अर्थ होता है पत्नी। देखो, अभी घर को भी पत्नी बोलने लगे अमर कोश वाले। जाया च गृहिणी गृहम, देखो जाया के लिए दूसरा शब्द है गृहिणी, गृहिणी के लिए दूसरा शब्द क्या है? गृहम। इति हलायुधः पश्यन्तु, अमरकोशे अपि यद् भवति तत् प्रददाति सः, हलायुधम् अपि सः आनयति अत्र। इतोपि तत्र बहु किमपि वर्तते। एभिर्विशेषणैः परोपकारित्वं सत्य किं सव्यवचनत्वं सत्यवचनत्वम्। ओके, सत्यवचनत्वं, यशः परत्वं, पितॄणां शुद्धत्वं च विवक्षितानि। तो परोपकारी थे वो राजा लोग, क्योंकि उन्होंने जो भी संग्रह किया धन का वो त्याग के लिए थे, परोपकार के लिए थे। तो पहला विशेषण जो था त्यागाय संभृतार्थानां, तस्य अर्थः देवर परोपकारी राजा। ओके, so one by one you can add. Let me finish these two shlokas. So next will be... I have one question. जी, I forgot the meaning for edhante. अत्र एधन्ते नाम संगच्छन्ते, अत्र संगच्छति इति अर्थः। संगच्छति नाम किम? एकत्रित रहना। ओके।
This is very important. शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्. Four stages of life. In Shaishav Avastha, what we should do? In Yauvan Avastha, what should we do? In Vardhakya Avastha, what shall we do? So they have given a list. Shaishave Abhyasta Vidyanam. They have studied in Shaishava Vidya till 25 or something. They have done Vidya Grahana. Okay. Then Yauvane Vishayeshinam. They were Vishayi. They used to enjoy of bhogas etc. in their Tarunya Avastha. What about Vardhakya Kala? Vardhakya Munivrittinam. They were Munis. They were Vanaprasthi in Vardhakya Avastha. In Yogena Ante Tanutyajam. Antim Avasthaya Bhavati Tasyam Avasthayam Yogena Dhyanena Ante Tanutyajam. They used to give up their body. So very nice shloka. Fixing their mind in meditation, they used to give up their body. Shaishave Shishor Bhavaha. Shaishavam means what? Balyavastha. Tasmin Vayasi Abhyasta Vidyanam. When Shaishava Avastha used to be there, they used to study. They have studied. Abhyasta Vidyanam, they have studied. What about next? Etena Brahmacharyashrama Vivakshitaha. Brahmacharyashrama Vivakshitaha. Yauvane Vishayeshinam. Yauvane Nama Kim? Yunaha Bhavaha Yauvanam. Yauvanam means what? Tarunyam. That is. Tarunyam Yauvanam Samam iti Amaraha. Tasmin Vayasi. In that Vaya, what they used to do? Vishayeshinam. Vishayeshinam Bhogavilashinam. They used to enjoy bhogas. That's it. Etena grahasthashramaha vivakshitaha. Vriddhasya bhavaha vardhakyam vriddhatvam. Okay. Then vardhakye tasmin vayasi muninam vrittihi iva vrittihi esham. Muni लोगों की जैसे वृत्ति जिनकी रहती थी उन वैसे ही ये सारे राजा लोग थे. अन्ते एतेन वानप्रस्थः विवक्षितः. ओके. मुनिवृत्ति अन्ते शरीर त्याग काले यह योगेन परमात्मा ध्यानेन तनुत्यजाम देह त्यागिनाम रघुनाम अन्वयम अहम वक्षे. That's how we have to take. Okay. Here we have finished 8th month also, and lastly here that main line is coming. Raghunam Anvayam Vakshe Tanuvak Vibhavopi San Tadgunaih Karnamagatya Chapala